We are live now. A very good evening and namaskar. I'm Devanshi Sharma, your host. Welcome to the final day of Legal Pathshala 2022 by Jabalpur Smart City Limited and Jabalpur Incubation Center. As every amazing thing comes to an end, here we are on the final day of this wonderful 15 days long legal focused training. This has been a phenomenal journey interacting with you guys along with the speakers as well as the experts. So, today we will have prominent guests from all over the country who have been a role model for many of us in India. So, before we begin the session, let me quickly introduce them. So it's a great pleasure for me to introduce our chief guest today, Mr. Nikunj Kumar Srivastav sir, Commissioner, Urban Administration and Development Department, UADD, Madhya Pradesh. Our guest of honor, Dr. Srinivas, Expert Advisory Committee member of Startup India Seed Fund Scheme, and also Assistant Director General, IP and TM, ICAR Research Education. We'll also have with us today Mr. Sivesh Kumar, founder and CEO, Startup Monk, where he's trying to bring all stakeholders of the startup ecosystem on a single platform. As well as we also have with us CA Anshul Agrawal sir, fellow member of the Indian Institute of Chartered Accountant, as well as past chairman on Bhopal branch of CIRC and ICAI for term 2021 and 2022, and remained on all posts of Bhopal branch like vice chairman and secretary. We have with us Ms. Darshana Thakkar, founder and CEO of Transformation, the Strategy Hub. She is a certified corporate director, MSME transformation specialist with hardcore industry experience of 25 years. We have with us FCS Devesh Goyal. He is a fellow member of the Institute of Company Secretaries of India, practicing company secretary at Goyal Devesh and Associates. We'll also have today with us Ashutosh Kumar sir with us, funding member at DS Center of Entrepreneurship. So welcome our all the guests. So before we begin the session, I think is not only fair to thank each and everyone associate in this unique and impactful initiative. First and foremost, the leadership of Jabalpur Smart City, where the whole idea was conceptualized. So it deserves a big round of applause. It is also important to mention Team Jabalpur Incubation Center, who have been working round the clock from last 15 days to ensure the smooth execution of the event and have been a great support for content preparation. A special thanks to the team of Jabalpur Smart City Limited who have been a great support throughout. Last but certainly not the least, but actually the most, all our viewers and students who have been a great support. You guys came online every day. Few of you came online from 5 to 6, and most of you watched the videos later than night. Your constant engagement, support, questions, and feedback was actually the major differentiator of the program. So I would now like to thank Agranshu sir, also incubation manager, Jabalpur Incubation Center, for being here with me from last 15 days. So welcome, Agranshu sir. थैंक यू सो मच दिवांशी। और मैं सबसे पहले तो जबलपुर स्मार्ट सिटी और इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से हमारे सारे गेस्ट्स को जो है बहुत हार्टी वेलकम करता हूं। और एक और बहुत अच्छी चीज़ हमारे साथ हमारे रिस्पेक्टेड कमिश्नर यूएडीडी श्री निकुंज श्रीवास्तव सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये हमारा इंक्यूबेशन सेंटर जो जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर लास्ट 3 इयर्स में वी हैव नर्चर्ड अराउंड 250 स्टार्टअप आइडियाज ईयर। और वो जो 250 आइडियाज हमने यहाँ पर नर्चर किए हैं, नए नए स्टार्टअप आइडियाज हैं। काफ़ी जो यूथ है वो बहुत मोटिवेटेड है लगातार स्टार्टअप्स के लिए। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट जो है हमारे स्टार्टअप्स को दे सकें। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़, ये सारी चीज़ें हमारे एक बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन में हो पा रही हैं
और मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं हमारे इंक्यूबेशन सेंटर की तरफ से सीईओ जबलपुर स्मार्ट सिटी श्रीमती निधि सिंह राजपूत मैम का। और मैम के ही मार्गदर्शन में जो है, उनकी गाइडेंस में हम लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट जो है वो स्टार्टअप्स तक पहुंचा सके। वी आर सेक्टर एग्नोस्टिक इंक्यूबेशन सेंटर। हर सेक्टर के स्टार्टअप्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो चाहे एग्रीटेक के स्टार्टअप्स हों, आईटी सेक्टर के स्टार्टअप्स हैं, गारमेंट सेक्टर के स्टार्टअप्स हैं। हमने रिसेंटली इंटरनेशनल स्कूल फॉर जो हमारा इंटरनेशनल स्कूल फॉर गारमेंट सेक्टर से हमने उनके साथ कोलैबोरेट करके जबलपुर में यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग के 6 स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया। और करेंटली हमारे साथ वर्चुअल और फिजिकल मोड में 105 स्टार्टअप्स जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो एक ये जर्नी है, इसमें बहुत कांस्टेंट और बहुत अच्छा सपोर्ट और एक लगातार हमें गाइडेंस रहा है हमारे सीईओ जबलपुर स्मार्ट सिटी। और अब जो है मैं मैम को हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ जबलपुर स्मार्ट सिटी श्रीमती निधि सिंह राजपूत मैम को इनवाइट करता हूं। और मैं चाहूंगा कि मैम जो है वो हमारे आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट और हमारे रिस्पेक्टेड श्री निकुंज श्रीवास्तव सर का और हमारे सभी गेस्ट का मैम वेलकम भी करेंगी। और इसका आज पूरा एजेंडा जो है वो हमें मैम के थ्रू जानने मिलेगा कि किस तरह से उन्होंने इस पूरी पाठशाला के लिए प्रेरित किया और फिर हम आगे बढ़ सके कि हम 15 दिन तक लगातार स्टार्टअप्स और नए एंटरप्रेन्योर्स को उनके स्टार्टअप जर्नी में आने वाली हर लीगल कठिनाई का समाधान लेकर के आ सके। तो मैं सबसे पहले अब इनवाइट करना चाहूंगा हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ जबलपुर स्मार्ट सिटी श्रीमती निधि सिंह राजपूत मैम को। और मैम जो है फॉर्मली एक बार वेलकम भी करेंगी सर को और आज के एजेंडे पे भी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मैम प्लीज। थैंक यू अग्रांशु। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं ये बताना चाहूँगी कि जबलपुर स्मार्ट सिटी ने जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर के साथ मिलकर एक 15 दिवसीय जो वर्कशॉप है लीगल पाठशाला, इसका आयोजन किया। इसमें ये एक्चुअली हमारे स्टार्टअप्स की डिमांड थी। हमारे स्टार्टअप्स ये चाह रहे थे कि जब वो कोई अपना नया बिजनेस शुरू करते हैं तो क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उस पर ज़रूर हमें कुछ वर्कशॉप या कुछ करना चाहिए। तो इसी के तत्वाधान में हमने ये 15 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। इस आयोजन का प्रारंभ जब हुआ 15 दिन पहले, तो उसका इनॉग्रल सेशन हमारे जॉइंट जो सेक्रेटरी सर हैं आदरणीय कुणाल कुमार सर, उनके उद्बोधन से हुआ। और आज मुझे बहुत ही हर्ष है कि इसका जो आज का जो समापन है वो आदरणीय हमारे ओएसडी कम कमिश्नर यूएडीडी श्री निकुंज श्रीवास्तव सर के गाइडेंस में ही समाप्त होगा। मैं बहुत ही हर्ष के साथ सर का वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ सर कि आप हमें यहाँ गाइडेंस के लिए इस पाठशाला में आपने अपना अमूल्य समय दिया। और मैं अपने सारे जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं उन सभी का भी वेलकम करती हूँ। अंशुल अग्रवाल जी का, शिवेश कुमार जी, दर्शना ठक्कर जी, आशुतोष कुमार जी, श्रीनिवास जी, दिवेश गोयल जी, आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्मार्ट सिटी की ओर से करती हूँ। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि इसमें आखिर 15 दिवस में हमारे यहाँ क्या हमारे स्टार्टअप्स को ये फ़ायदा हुआ और क्या हमने इसमें लीगल पाठशाला में किया। तो जो भी हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो स्टार्टअप्स हैं, जब वो बिज़नेस कोई करते हैं तो कैसे उनको अपनी कंपनी रजिस्टर करना है, क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, क्या लेबर लॉ हैं, क्या उनके कंप्लायंसेस हैं क्वार्टरली, ईयरली एंड हाफ ईयरली, कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है, एग्रीमेंट कैसे होता है, इन सारी चीज़ों पे हमने ये पाठशाला रखी, जिसमें हमारे बहुत ही रिनाउंड लोगों ने हमें 15 दिवस जो हमारे गेस्ट थे उन्होंने हमारे स्टार्टअप को संबोधित किया। और सर मैं ये बताना चाहूँगी कि हमारे करीब 8,000 स्टार्टअप्स जो और न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं, और उसमें कुछ पुराने लोग भी हैं जिनको कुछ कन्फ्यूजन्स थे, उन्होंने इस पाठशाला का लाभ उठाया। तो ये काफ़ी सफल रहा। और हमें सर आप गाइडेंस करेंगे तो हम आगे भी ऐसे अपने स्टार्टअप्स के लिए कुछ कार्य करेंगे। अब मैं इस पाठशाला को उद्बोधन करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए अपने हमारे जो ओएसडी कम कमिश्नर यूएडीडी हैं आदरणीय निकुंज सर, उनको आमंत्रित करना चाहूँगी कि सर प्लीज़ हमें गाइडेंस दें। सर।
Thank you, Nidhi. Thank you very much. And at the outset, I would like to thank the organizers for doing such a wonderful thing. And I'm very happy to be part of this valedictory function of this 15 days illegal Pathshala. The government of India and the state government, both for some time, have been talking about ideas like Startup India, Make and today India is now one of the largest India has one of the largest ecosystem. And a few days back I was going through the economic survey report, and they say that right now we stand as the third largest uh, ecosystem in terms of the startups. And the key strategy of the government of India and the state government has been basically to improve ease of doing business. So this is what the government has been working in the last few years, so that startups could be promoted, and we have been able to achieve significant success in this area. And the ranking of the country in ease of doing business has improved, and we can see this in terms of the number of startups that are coming up, and we can also see this in terms of the spread of the startup. And I think the one glass ceiling that has been broken in last few years is the now the startups are coming up in big towns like Hyderabad, Bangalore. So this is one positive sign. But I think whatever the government may do, whatever however we may try to make, however we may make the entire system easy for a new entrepreneur, the startups will have to meet some formal and legal requirements before they can start the formal business. And they have to be careful about legal compliances. So I'm very happy that this e-Pathshala online this online e-Pathshala was organized for the new startups, because a person may have idea, but when he wants to translate his idea into startup, he has to understand the ecosystem of startups. So besides entrepreneurship, besides other things, you also need to understand the legal compliances, because the business has to be business. When you start a business, it's a formal arrangement. So one needs to understand the company law, one needs to understand the labor law, one needs to understand the taxation regime, the accounting system, and all this, however easy it may be made, but it is still requires some bit of understanding. So such kind of workshops are very, very useful. And I'm very happy that Jabalpur Smart City and the Jabalpur Smart City Incubation Centers are organizing such workshops. And I know this is not the first one. This part of a series of the workshops that have been continuously organized. And I'm very happy that the impact of the COVID is also coming down. So now, besides online, we can have face-to-face workshops also, because they have a different kind of impact on the trainees. And but the advantage of the online training is that you can reach to far more number of people, and you can reach to people beyond Jabalpur, beyond Madhya Pradesh. So this is one this is one positive side of online trainings. And my heartiest congratulations to all the budding entrepreneurs who joined this workshop and successfully completed their course, and today they are being awarded the certificate. And I wish all the young budding entrepreneurs and the startups a big success, and I hope that they become unicorns. Unicorns is considered to be a milestone in the startup business. And I was in San Francisco for uh, 1 year, and many of my batchmates from my school days have done startups, and it's a it's a very like very very exciting thing. But you have very tough life. You have to work very hard. So best wishes, and uh, to the all the uh, trainees who just got the certificate. And thank you to the organizers for inviting me. Thank you very much. Really, thank you so much, sir. और वाकई में देखिए, we have always been getting constant support from all the authorities, from our UADD, especially from our UADD department.
वहाँ से और लगातार एमएसएमई से हमारे स्टार्टअप्स को कांस्टेंट सपोर्ट आ रहा है। और डेफिनेटली जैसे सर ने कहा, दिस इज पार्ट ऑफ आवर सीरीज। हमने सबसे पहले स्टार्टअप पाठशाला किया था 2020 में, जब जस्ट कोविड अपने पीक पर था। उस टाइम पर हमें लगभग 1 लाख लोगों ने ज्वाइन किया था। और उसके बाद जो है हमने कोडिंग पाठशाला किया, जिसकी 250 मोबाइल एप्लीकेशंस आज भी गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं। तो डेफिनेटली मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड निकुंज श्रीवास्तव सर का, हमारे सीईओ जबलपुर स्मार्ट सिटी श्रीमती निधि सिंह राजपूत मैम का, जिन्होंने कंटिन्यूसली, जिनकी सपोर्ट के कारण जो है आज स्टार्टअप इकोसिस्टम जो है मध्य प्रदेश में कंटिन्यूसली अपना बूस्टअप कर रहा है। हमने जब जबलपुर में स्टार्ट किया था, वी यूज्ड टू हैव ओनली 12 स्टार्टअप्स इन इंक्यूबेशन सेंटर, बट नाउ एज आई सेड कि currently for this physical year we are already nurturing 105 startups। तो जो यूथ में हमें स्टार्टअप्स के लिए एक कंटिन्यूअस मोटिवेशन दिख रहा है, वो हमारे इस स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और हम चाहते हैं इस तरीके का सपोर्ट जो है हमेशा हमें मिलता रहता है। और इसी का ये फल है कि कंटिन्यूअसली जो यूथ है यहाँ पर मोटिवेटेड है अपने वेंचर्स शुरू करने के लिए, और वो बार बार कोशिश कर रहे हैं हमारा यूथ यहाँ पर कि वो जॉब सीकर से ऊपर उठ के अब जो है वो जॉब प्रोवाइडर्स की जर्नी में आ सके। और डेफिनेटली यही हमारे उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जिसका सपना हम देख रहे हैं, डेफिनेटली उसकी तरफ आगे बढ़ने के लिए बड़ा कदम हो सकता है। तो वी आर रियली थैंकफुल टू यू सर, और मैम का भी जो कंटिन्यूअसली हमें इसी तरह से मोटिवेशन, we have been getting guidance from you all, and because of that only we have been able to actually get to a level where we can say ki yes, we are in a stronger position to say that we are in a stronger startup ecosystem now, और ये कंटिन्यूअसली बढ़े। और जैसा कि सर ने एक बहुत अच्छी चीज कही, यही चीज हम देखना चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमारे मध्य प्रदेश से यूनिकॉर्न्स जो है वो निकल करके आए। जो पूरा हमारी मेहनत है, हमारा जो सपोर्ट है वो इसी चीज के लिए है। जितने ज्यादा यूनिकॉर्न्स जो हैं वो मध्य प्रदेश से प्रोड्यूस हो सकेंगे, हमारे जबलपुर से भी यहाँ हमारे पास पोटेंशियल स्टार्टअप्स हैं। वी हैव गॉट द स्टार्टअप्स हु हैव द पोटेंशियल टू बिकम द यूनिकॉर्न कंपनीज। और जो बडिंग स्टार्टअप्स हैं उनको जहां पर भी किसी तरीके की कोई सपोर्ट की जरूरत होती है, तो हम कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहे हैं कि उन तक बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट पहुंचा सकें। I would also like to welcome and all our guest of honors for today। और मैं वन बाय वन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि हम हमारे सारे जो स्टार्टअप्स हैं, जो लोग कंटिन्यूअसली हमें जुड़ रहे हैं, वो उन्हें सुनना चाहेंगी। तो नाउ आई वुड लाइक टू वेलकम डॉक्टर के श्रीनिवास, who is the expert advisory committee member of Startup India Seed Fund Scheme। और Startup India Seed Fund Scheme इस समय definitely it has been playing a wonderful role, जहां पर स्टार्टअप्स को ग्रांट्स और के फॉर्म में एक अच्छा अमाउंट ऑफ फंडिंग्स में बहुत ज्यादा मदद मिल रही है। डेफिनेटली आई वुड नाउ लाइक टू वेलकम डॉक्टर के श्रीनिवास एंड वी वुड लव टू हैव हिज वर्ड्स ऑन दिस लीगल पाठशाला। सर, sir, you are on mute. Sir, you are on mute. Thank you, Angranshu. Today's chief guest, Mr. Srivastav, CEO Smart City, Mrs. Rajput, if I am not wrong. Rest of the guests today, thank you for calling me, inviting me to this particular city. In fact, let me tell you, I have a very large time of my time I spent in Jabalpur. I studied in Jabalpur. My graduation and post-graduation is from there. And suddenly, when I received a mail from this one, I actually came for that thing. Let me see what exactly Jabalpur is doing it. So thank you for which. And this time I was looking into your complete program, and I found that it is quite interesting. And are quite lengthy also, specifically when you are dealing in terms of legal things about the startups. You have covered almost all the things, rather more things that immediately startup may not or may require, but you have at least sensitized him that what in future may come up. Definitely Startup India is one of the important and flagship program of Government of India, which has been launched by Honorable Prime Minister in 2016 January. And
In that, definitely they have thought of a strong roadmap for a longer time. And fortunately, I was one of the members of the very large team that has been there, which has been making the path of the Startup India team, and in which definitely the incubation centers and accelerators are expected to play a very big role, because the in the valley of death, incubators and accelerators are basically the bridges that try to avoid death of the startup, because earlier 90-95% of the startups used to crash down before they even go to the market stage. But with the incubation support, this survival percentage of startups have increased up to 30 to 40%, which can still increase more, subjected to condition that incubators really do the needful with the startups, because startups are there with bubbling ideas and bubbling POCs, but they lack in all the periphery things, in which legal and company issues are one thing which are very very important, and if they really at this particular time they work out, that will be good. Another area where most of the startups fail, they are mostly technical people with lot of ideas, converting the ideas into the products or services, whichever is there. The another area which they lack is basically the financial management, starting from where to get the investment, whether it's a bootstrap, whether it's from any angel investors or venture capitalists, or even a debt, because a lot of MSMEs are there who raise the debts and all those things. Any type of things, any type of financial liability they started taking up on their arms, that means they have to be very prudent in the financial management of their company, not only the company, but also in a larger respect for the yeah, in these compliances are also important. I was seeing in legal this Pathshala only, you have talked about the GST laws and all those things. Definitely they are important, but internal financial management, where to put money, whether it is in operations, you require more money in operations, whether you are more require more money in customer acquisition and customer retaining, these type of things. Actually, if you come up with this type of things, definitely your survival rate of your startups will increase. Another important thing, as you are telling, you have a large setup of startups, and I hope they are all registered on the Startup India portal as a startup. If not, kindly do it, because that is one of the important thing for them to get some sort of advantage in this particular area. The main advantage, as you know, is one of the things is income tax is definitely there. Apart from income tax, government procurement, at least central government procurement, 20% of the procurement has to be done either through either from MSME or startups, which is an important thing. If there is startups comes with a new things where they don't have any competition sometimes, so you can easily pitch up there as a start if you have the Startup India registration number. Besides that, definitely, as you are telling me that I have been advised in the advisory committee of the Startup India Seed Fund. That is another way that startups can avail some funding, some grants, and some even convertible type of instruments. They can avail some money up to 50 lakh rupees from the incubator, but it has to be going through incubator. So they have to select the incubator, and then they have to apply for it. They have to get started. So these are the issues that is there. Once the money comes from any money comes from outside, they have to be very strict in their financial management, very very prudent. And I hope you will be taking up this particular aspect in your next Pathshala whenever you are going to do it. Nevertheless, I presume that all the participants who have been in this particular area have been doing very very good and understood whatever is important for them, probably in next first 2 to 3 years, and then again they need to be refurbished. Their gyan has to be increased. That is what
you need to give some sort of additional doses of the things. With this, I again congratulate Jabalpur Incubation Center and Smart City Project of Madhya Pradesh, and thank you, Mr. Nikun Srivastav ji, for having me here along with you, and also to the CEO of Smart City. Thank you very much. Yes, really. Thank you so much, sir, for your words of blessings. And definitely, we have been pushing our startups to get registered with the Startup India portal, getting DPIIT certificates, and also, when they are looking forward for the funds, definitely our government of India has definitely come up with such a wonderful scheme like the Startup India Seed Fund scheme. We are so thankful on behalf of the startup community. थैंक यू सो मच सर एंड नाउ डेफिनेटली एज वी नो स्टार्टअप्स का जो जर्नी होता है अपने आप में एक मॉन्क्स का जर्नी भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत पेशेंस चाहिए होता है वो अप्स एंड डाउन्स से आगे बढ़ते हुए तो अब मैं अपने इस कार्यक्रम में मैं प्लीज इनवाइट करना चाहूंगा हमारे फाउंडर स्टार्टअप मॉन्क श्री शिवेश कुमार जी को हु हैज बीन कंटिन्यूअसली हेल्पिंग आउट स्टार्टअप्स और प्लीज हम आपके थ्रू जानना चाहेंगे बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे स्टार्टअप्स आपसे सुनना चाहते हैं शिवेश जी वेलकम टू आवर शो एंड डेफिनेटली वी ऑल हैव बीन वेटिंग टू लिसन सो मच फ्रॉम यू प्लीज शिवेश जी Thank you, Agransu, and thank you, JIC, for inviting me to be part of this STEAM panel. मैं इस पैनल के सामने बहुत ही छोटा हूँ. You all are experts. I am from the startup ecosystem. I have raised some startup into the past, so I know the pain. When sir was talking about the financial difficulties and then the legal compliance, I raised my first startup in 2012-13. तो मुझे ये भी नहीं पता था कि रजिस्ट्रेशन में क्या होता है. आई वॉज इवन नॉट अवेयर कि फाइनेंस कैसे मैनेज करते हैं. बट वी वर लकी दैट वी टुक एन एग्जिट. हमने वो स्टार्टअप को एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल कंपनी को सेल करके हम निकल गए थे. So that was thing, and from that time onwards, I am working into startup ecosystem in the capacity of angel investor, advisor, and mentor. So I know the pain, Agransu, when we talk about raising startup into incubation center. मैं जानता हूँ कितना painful है because मैं भी फर्स्ट टाइम फाउंडर्स एंड अर्ली स्टेज एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम करता हूँ. एंड रिसेंटली मेरा एक स्टार्टअप गॉट सेलेक्टेड फॉर वाईसी विंटर बैच 2022. सो आई नो कि कितना स्ट्रीमलाइन करना है. तो I just wanted to, as I have 5 minutes, not more. So मैं just to the audience, मैं तीन चीजें I have just thought into my mind about raising a startup. वो बस I want to discuss. And that is thing. First of all, I would like to congratulate all the founders or early stage entrepreneurs जिन्होंने reach out किया है JIC को, so that they also want to become, as Agransi mentioned, to job providers rather than job seekers. And when they decided to work on a consumer problem, it is not only that they are raising a startup, they are indirectly also helping in raising a nation. जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करते हैं, आई वाज रिसेंटली टॉकिंग टू समबडी ऑन द ट्विटर एंड उसने मेंशन किया था ही इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट इनटू यूएस. तो वो मेंशन कर रहे थे बाय 2025 टू 2028 द स्टार्टअप इकोसिस्टम जो हमारा है अभी इंडिया का, अगर सेम पेस से चले तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी विल बी नथिंग. So in last 2 years we have given somewhere around like 40 unicorns. अब हमारे आगे बस चाइना एंड यूएस ही हैं. सो वी आर लाइक गोइंग अहेड एंड बाय 2025 आई थिंक सेकंड और फर्स्ट पोजीशन पे भी आ जाएंगे द वे वी आर ग्रोइंग. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू कांग्रेचुलेट फाउंडर्स जो इन्होंने आए हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ द चेंज. जो हमने देखा है दे आर पार्ट ऑफ द चेंज. सेकेंडली मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि डोंट बी अफ्रेड टू फेल, क्योंकि रेजिंग ए स्टार्टअप इज ऑलमोस्ट लाइक एन एक्सपेरिमेंट. जैसा हम फिजिक्स में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं, कोई भी साइंस के सब्जेक्ट में करते हैं, इट इज एन एक्सपेरिमेंट. स्टार्ट करने से पहले हम लोग एज्यूम करते हैं चीजें कि ये टारगेट मार्केट हमारा होगा, ये हमारा मार्केट साइज होगा, ये प्रोडक्ट कंज्यूमर्स को पसंद आएगा. बट जब हम रियलिटी में ग्राउंड हिट करते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंप्लीटली डिफरेंट सीन हमको देखने को मिलता है. तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ दैट कि सोचा कि सर काम नहीं करेगा तो हमको करना ही नहीं है. ट्राई टू इम्प्रोवाइज. ठीक है, हिट किया, कुछ भी हो सकता है, कॉम्पिटिटिव वॉरफेयर हो सकता है, टेक्नोलॉजी चेंज कर जाती है बहुत टाइम्स में. तो यू मे फील डिफिकल्टीज एंड यू मे फील लाइक ओके अब इससे आगे कैसे जाना है. इन दैट इज द टाइम व्हेन यू नीड टू कीप ए काम हेड ऑन योर shoulder
because you need to improvise. Agar if we know about the some of the like major startups of world, YouTube, they started as a dating app, but they improvised because उनको लगा उस it was not a right time to go ahead with that. They improvised, they moved. Even अपना Indian startup iBibo, it was a social media platform like Facebook. नहीं चला, they moved to gaming platform. उन्होंने gaming का बनाया, वो भी नहीं चला तो they converted into travel. Last में it got sold for 900 crores to make my trip. तो ट्राई टू इम्प्रोवाइज, जैसे जैसे प्रॉब्लम हिट करेगा ट्राई टू इम्प्रोवाइज. सो 2019 में जब अमेजन ने संभव अवार्ड्स स्टार्ट किए थे, तो आई वाज द चेयर ऑफ देयर जूरी मेंबर, जो उनका अवार्ड था, तो आई वाज द चेयर ऑफ देयर जूरी मेंबर. तो आई मेट जेब बेजोस, ही वाज हियर इन टू इंडिया. तो उसने बहुत अच्छी बात एक बोली. तो उसने बोला था ना कि इट इज ओके टू फेल विद द प्रोडक्ट, बट इट इज नॉट ओके टू फेल विद द प्रोसेसेस. Set the processes, work on the processes, because that is only thing which is going to make you a success in startup. बोला प्रोडक्ट तो Amazon, he was like कि Amazon के इतने प्रोडक्ट्स फेल किए थे, they try to copy eBay, उनका कुछ था Z मार्केट या Z बे समथिंग था. तो ही वाज लाइक कि हमारा भी फेल किया था, इतने पैसे हमने डाले थे, बट हमारा प्रोसेस टिक था कि हम इस प्रोसेस को फॉलो करते. तो फॉर फाउंडर्स इट इज ओके टू फेल, बट डोंट फेल विद द प्रोसेसेस. प्रोडक्ट में इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा. एंड थर्ड जो है, that will be more like to do say that कि don't get intimidated by the funding stories. अगर आप ज्यादा योर स्टोरी पढ़ रहे हैं, इंक 42 पढ़ रहे हैं, and if you are seeing that everybody is getting funded and you are not getting funded, so don't get scared of that कि you are not going to survive. Work on the problem that you are working on. मेक योर जो कहते हैं ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ योर प्रोडक्ट, उसको इंक्रीज करो. आज के डेट में 2x प्रोडक्ट अगर तुम्हारा बेटर है तो नोबडी इज गोइंग टू बाय इट. एटलीस्ट मेक इट 10x बेटर, देन ओनली यू आर गोइंग टू सर्वाइव इनटू द मार्केट. एंड वर्क ऑन, देयर आर टू टाइप ऑफ इनोवेशंस जो मैं हमेशा बोलता है. एक होता है डिसरप्टिव इनोवेशन, एक होता है इंक्रीमेंटल इनोवेशन. सो इंक्रीमेंटल इनोवेशन का एग्जांपल ले लेता हूं, तो आईफोन 12 से आईफोन 13 हो गया, दैट इज इंक्रीमेंटल इनोवेशन. So try to work on a disruptive innovation जो completely change कर दे the way you are doing that. And जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है उसमें डेफिनेशन भी जो स्टार्टअप का है वो यही है कि इट नीड टू बी इनोवेटिव बाय प्रोडक्ट सर्विसेज एंड प्रोसेसेस, so that it is going to disrupt the market and attract the risk capital जो angel investor है. So try to bring in disruptive innovation into that. And I think that are the 3 points that I wanted to share with the audience, and you guys are doing a really great job. Best of luck, Ransu, with थैंक that. यू शिवेश, रियली थैंक यू सो मच. और डेफिनेटली वही वो जो डिस्ट्रप्टिव आइडियाज हैं, वो जो इनोवेशन है, दैट इज व्हाट वी हैव बीन फोकसिंग सो मच एंड वी हैव बीन ट्राइंग टू मोटिवेट आवर स्टार्टअप्स. क्योंकि सबसे पहले जो यूथ है जिसके पास इतना एनर्जी है, उसको उसका डायरेक्शन सही होना बहुत जरूरी है. एंड विद ऑल आवर एफर्ट्स वी हैव बीन, दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन ट्राइंग टू डू. और अब इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए डेफिनेटली देखिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आज हमारा देश देख रहा है. एक टाइम था जब कौन बनेगा करोड़पति जब आया, तो पहली बार लोगों ने रियलाइज किया कि शायद 40 दिन में भी कोई एक व्यक्ति जो है 40 एपिसोड में करोड़पति बन सकता है. बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आज जैसे ही हमने देखा कि जब जैसे ही हमारा जो अभी नया शो है जिसमें स्टार्टअप्स को कंटिन्यूअसली फंडिंग्स मिल रही हैं, तो वहां पर देखने मिला कि हर दिन एक करोड़पति बन सकता है. तो डेफिनेटली ये ट्रांसफॉर्मेशन है. और ऐसे ही कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस पर बात करने के लिए जो है आज हमारे साथ मिस दर्शना ठाकर हैं, सीईओ ट्रांसफॉर्मेशन द स्ट्रैटेजी हब. क्योंकि बहुत जरूरी होता है ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी लेके हमारे स्टार्टअप्स आगे बढ़ रहे हैं. और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप और जो एक पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है वो तब तक नहीं आ सकता जब तक हमारे जो लीड कर रहे हैं वहां पर जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ना हो. तो डेफिनेटली अब मैं दर्शना मैम को इनवाइट करना चाहूंगा फॉर हर वर्ड्स, और किस तरह से हमारे स्टार्टअप्स को वो आगे गाइड करना चाहते हैं मैम, प्लीज. I would like to thank JIC first of all for inviting me on this platform. I am happy to share my thought with all the people of entrepreneurs of our country. I'm very happy that I am also supporting the startup ecosystem of the Gujarat, and now I am a part of the Madhya Pradesh startup ecosystem. So I'm so happy.
I also thanks Nidhi ma'am and Srivastav sir over here, and congratulate all the team members for doing this great effort for this startup ecosystem. Uh, I would like to share my thoughts about the startup that our country is doing very well from last 5 to 6 years. As Srivastava sir mentioned that the ease of doing business, right? So earlier, ease of doing business in if we talk about in 2015, our rank of ease of doing business was 142nd, and now as on 2020 we are on 63rd number. So this is a tremendous jump in ease of doing business, because government has done the good effort to make all the legal compliances and all the registration online and with very easy and comfortable for people to do the business. So any inexperienced person also can start the business by searching on the Google, and with the help of internet, with the help of consultant. There is no need to rush to the offices in different area of the district and the region. So that's also good thing. Second good thing is that in terms of innovation also we have jumped many point from 2015 we are on 81st point worldwide in the innovation index, and now in 2021 we are on 46 point. This is also very impressive that we jumped this much point in last 5 6 years. So this really motivating for all the startup ecosystem. And apart from that, the COVID has come with the challenge of many challenges, research on the business and all that. But to be frank, the unicorn ratio as of now, we have a 85 unicorn founders in our country. Out of that, 51%, that is about 43 unicorn are up to 2020, and just in 2021 only the unicorn has come to 42 numbers, 50%, almost 42 numbers unicorn have become in 2020 only. This really impressive data and encouraging for all the startup. And my suggestion to startup is that apart from the financial management is a good thing that have to manage properly, but most important thing is commercialization of the startup. Most of the startup fails in the initial stage, initial 2 years only. Now there is a competition of Chinese product in our country, so we have to be competitive in terms of cost, quality, and delivery. So most important thing for our startup is to survive in terms of cost, in terms of delivery time, and in terms of services customer support. So we have to, our startup have to work very hard on the commercial part, cost reduction, cost management, and fund management. As of now, as per the data, there are 57,000 registered startup in India, but as of now in 2021 only 39,000 startups are active. So almost 18,000 startups are died out. So that is the really informative data for all the startup. I would like to share with the startup of our country that be cost conscious in your business. It's very important factor. In the beginning, where we have a fund, we have a grant from the government, we have a fund from the parents and family. We are spending the money like anything. That all the money are in marketing and machinery and all that. But be conscious about the working capital. It's really hard thing to manage after 1 year of the startup. So my suggestion to each and everyone, every aspiring entrepreneur and the startup, that try to manage your cost as best as possible. That is the real transformation of your business. So, and be innovative is also important thing. Don't stick to one product and one strategy. Continual improvement, not at a time drastic, but continual improvement. Small steps, baby steps are much needed in your startup. So I suggest all of them, all of you startup people who are listening to our program, that be conscious about the cost and be innovative as far as possible. Thank you. I don't take much time because Thank you so much. we are running Thank you out so of much, time. Darshana So ma'am. Yes, बिल्कुल thank you, आपने पॉइंट टू Divanshi. पॉइंट बात की है कि बी इनोवेटिव। बिल्कुल लगातार एक एंटरप्रेन्योर को काम करते रहना पड़ता है, चीज़ें इम्प्रूव करना पड़ता है। तो नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सीए अंशुल अग्रवाल सर टू एड्रेस द यंग participants of Legal Pathshala and sharing few words about the program. Over to you, Anshul sir. Am I audible, Devanshi? Yes, sir. Thank Perfectly you so audible. much. Respected Chief Guest of today and Commissioner Urban Administration Development Department, Shri Nikunj Srivastav sir.
all other dignitaries, audience, founders, co-founders of various startups, organizers, team of Legal Pathshala 22, that is Jabalpur Incubation Center and Jabalpur Smart City. Very good evening to all of you. Thank you. And first of all, I would like to thank organizers for inviting me in the valedictory session. मेरे पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि मेरे पहले वाले जितने स्पीकर्स थे उन्होंने मेरे सारे के सारे पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं. एनीवे, स्टार्टअप अवेयरनेस के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? I have gone through the curriculum of this entire 15-day capsule program, beautifully planned and perfectly executed. Starting from registration part, it covered intellectual property like very important trademark, patent, copyright, compliances, agreements and even contracts, most important taxation, accounting and all. Just my suggestion that if possible include, as everyone said, just include government-sponsored yojanas, which include subsidy बिल्कुल and finance scheme, along with the documentation part. Because what happens, as Sivesh said, rightly said, he understand the pain. बिकॉज मेरे पास जब लोग आते हैं और लोग आने के बाद बोलते हैं कि साहब फंड्स कहाँ से मिलेंगे, पेपर्स कहाँ से अरेंज करने, हम उनको एक पेपर की लिस्ट बना देते हैं. तो जब हम पेपर की लिस्ट बना देते हैं तो उनका आधा तो हौसला वहीं पे पस्त हो जाता है, यार इतने पेपर्स कैसे अरेंज करते हैं. सो अगर हम शिवेश, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. डेफिनेटली मैं You are सर perfectly इतनी right, इम्पोर्टेंट perfectly चीज right. आप तो जब हम उसको डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनाते हैं कि साहब आपको सीजीटी एसएमई में लोन लेना है और सीजीटी एसएमई में लोन लेने के लिए हमें इतने पेपर्स की रिक्वायरमेंट लगेगी. बिल्कुल और मैक्सिमम लोग हम चाहते हैं कि कोलेटरल फ्री लोन लें, क्योंकि ज़्यादातर लोग ऑब्वियसली बात है स्टार्टअप कर रहे हैं तो यंगस्टर्स हैं, दे डोंट वांट कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी कोलेटरल में रखें. तो ये एक बेसिक इश्यूज होते हैं जो सबसे सबसे बड़ा रोड़ा होते हैं, मैं बोलूँगा स्टार्टअप्स के अंदर. सो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट सीजीटी एसएमई में हमें क्या क्या चीज़ें कवर हो सकती है. सीजीटी एसएमई का मतलब ऑब्वियसली बात है सब समझते होंगे, फिर भी बता देता हूँ. कोलेटरल फ्री लोन मेरा यहाँ पे मतलब है. इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी. अभी आपने सभी लोग जो है वो शार्क टैंक देख ही रहे होंगे, तो शार्क टैंक में यू माइट हैव फाइंड कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी जिसकी जो मर्जी आ रहा है वो मांग रहा है. एक्चुअली में रियल लाइफ इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट शार्क. इक्विटी का वैल्यूएशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज होता है कि भाई आज आप जहाँ खड़े हो आपकी वैल्यू क्या है, आप सही पिच कैसे करोगे, किस वैल्यू पे आपको ले रहे हैं, टर्नओवर से इसके लिंकेज और इसके रेशियोज कैसे निकालें. So that is very very important. I urge to all organizers कि ये part जो है वो कुछ अगर possible हो तो please उसको add करिए. And if you require any help of mine, then I am always 24/7 available without any consultation fees for that. ग्रेट. Apart from that, जैसे मैंने बताया कि मेरे पास स्टार्टअप के लिए लोग आते हैं और अभी शार्क टैंक के बाद से मैंने बताया कि बहुत ज़्यादा ही लोग आने लगे. तो उनका एक ही मोटिव होता है कि मैक्सिमम फंडिंग चाहिए, इक्विटी सेल करना है, सब्सिडी चाहिए. तो अल्टीमेटली मेरा आप ऑडियंस से यही बोलना है कि इन्वेस्टर्स, सब्सिडी, टैक्स बेनिफिट, कंसेशनल डेट्स, वेंचर फंडिंग, दैट मे बी सेकेंडरी. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि बेसिक सेंस ऑफ डूइंग बिजनेस, अकाउंटेबिलिटी अगेंस्ट लाइबिलिटीज. जो फंड्स आ गया उसका मिस यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए कि उससे हमने गाड़ी खरीद ली. रैशनलाइजेशन ऑफ फंड्स. रैशनलाइजेशन ऑफ फंड्स का मतलब होता है कि फिक्सिंग ऑफ प्रायोरिटीज, कि आपको जो फंड आया है वो फंड का यूटिलाइजेशन, जैसे सीसी बन गई. अब सीसी में आदमी खुला छूट हो जाती है कि वो पैसे को चाहे तो बिजनेस में लगाए या अपने घर पे ले जाए. तो रैशनलाइजेशन ऑफ फंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जैसे मैम ने करेक्टली कहा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स खुलते हैं पर पहले 2 साल में बंद हो जाते हैं, क्योंकि जो फंड डिसिप्लिन है वो फंड डिसिप्लिन कहीं ना कहीं लैगिंग होता है. एंड आई बिलीव सो फार स्टार्टअप्स आर कंसर्न, यूनिकनेस टू रिप्लाई कि वाई मी इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप मार्केट में पिच करते हो तो आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई मैं कौन हूँ और मुझसे ही क्यों बिजनेस करो. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आई बिलीव. कुछ थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूंगा, कुछ एग्जांपल कोट करना चाहूंगा मैं. बिल्कुल जस्ट बिल्कुल वांट टू कोट एग्जांपल कि कुछ टाइम पहले वेयर हाउसेस के अंदर और पॉली हाउसेस के अंदर बड़ी सब्सिडीज चल रही थी. तो मार्केट में एक बाढ़ सी आ गई कि वेयर हाउस बनाएंगे, पॉली हाउस बनाएंगे. डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, कितनी रिक्वायरमेंट है, ये सोचे बिना लोगों ने वेयर हाउस और पॉली हाउसेस बनाए. नतीजा ये हुआ कि जो शेड्यूल बैंक का रिसेंट डेटा मेरे पास आया अभी, उसमें एक शेड्यूल बैंक के 25% जितने भी उसकी फंडिंग थी उसकी 25% अक्रॉस अकाउंट्स अक्रॉस इंडिया जो है वो एनपी हो चुके हैं, क्योंकि लोगों ने विदाउट रिसर्च इन्वेस्ट करा था एंड पेशेंस के बिना इन्वेस्ट करा था, क्योंकि उनके पास रिटेंशन पावर नहीं थी. तो अगर आप बिजनेस स्टार्ट करें तो यू शुड हैव पेशेंस कि कुछ टाइम आप सस्टेन कर सकें. यू शुड हैव अ प्लान बी, जैसा सिवेश ने बताया कि अगर हमारा एक प्लान पिच नहीं हो रहा है वी शुड हैव एन अल्टरनेटिव प्लान. एंड थोड़ा सा और वी एज एन इंडिया अगर मैं बात करूं तो लुकिंग डेस्परेटली फॉर एंटरप्रेन्योर्स जो भीड़ का हिस्सा नहीं भीड़ का कारण बने.
And in my opinion, unemployment problem cannot be solved until unless new business units emerges out. I believe government has also tightened belt for the same path, and on various finance schemes and skill development programs are evident of that. So I have taken much time. Once again, I congratulate Team Legal Pathshala for this amazing thought process and awesome compilation of materials. Thank you so much for inviting me. Thank you. Over to you. थैंक यू सो मच अंशुल जी। Thank और you so देखिए, much. अंशुल जी ने शुरू में जैसा कहा था कि सब मेरे जो बाकी साथियों ने सभी कुछ कवर कर लिया है, बट डेफिनेटली अंशुल जी आपने इतनी महत्वपूर्ण चीजें इस समय कवर करी हैं। हम यही कोशिश कर रहे हैं लगातार कि जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स उसमें उन्होंने वो हम बिजनेस सेंस डेवलप कर सके। और डेफिनेटली आपका जो एक बहुत अच्छा और बड़ा इंपॉर्टेंट आपने जो सजेशन दिया हुआ है कि किस तरह से डिफरेंट स्कीम्स के लिए भी हम बहुत जल्दी इस पर हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे कि हम इस तरीके से कर सकें। और अब जो है हम बिल्कुल हम लगातार हम चाहेंगे कि अंशुल जी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे स्टार्टअप्स को Pleasure is मध्य all mine. प्रदेश की सपोर्ट कर सके। जैसा कि उन्होंने कहा, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा पार्ट है वैल्यूएशन और इस सब का, इसमें उनकी जरूरत होती है। क्योंकि अब वैल्यूएशन की बात हो गई है, वैल्यूएशन के बाद अगला जो स्टेप होता है बड़ा महत्वपूर्ण फंडिंग्स का होता है। तो हमारे साथ श्री आशुतोष कुमार जी हैं, फंडिंग मेंबर फ्रॉम डीएस सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो मैं चाहूंगा आशुतोष जी को इनवाइट करता हूं अब शो पर। और डेफिनेटली आशुतोष जी, वी वुड लव टू हियर अ लॉट फ्रॉम यू, क्योंकि ये वो चीजें हैं हमारे स्टार्टअप्स इस समय सबसे ज्यादा यहीं पर फोकस चल रहा है। जैसा कि सर ने कहा, शार्क टैंक ने एक कंप्लीट माइंडसेट चेंज कर दिया है। शायद 40 जैसा कि मैंने पहले कहा था कि 40 एपिसोड्स में 1 करोड़पति बनता था, और इस बार के जो 40 एपिसोड्स थे शार्क टैंक के, 166 इस तरीके के करोड़पति बन गए हैं। तो वो एक नया विजन जो है वो यूथ को मिला है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे फंडिंग्स आ रही हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उनसे रिलेटेड। और लीगल पाठशाला हमारा कितना बड़ा इम्पैक्ट किया है, वो अब हम थोड़ा सा आशुतोष जी से जानना चाहेंगे। आशुतोष जी, वेलकम टू आवर शो, और डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। Good evening, and thank you, hosts, guests of honor, and esteemed panelists, and all participants for having me here today. Uh, Currently, I assume the role of the DS, managing the DS Center of Entrepreneurship at IIT Delhi, but my journey in this space goes back 13 years when I started my first startup from my college dormitory. And I'll be speaking from my own experience. I would not comment on Shark Tank. In my opinion, it's an entertainment show. But then uh, uh, I haven't had the opportunity of going through the entire curriculum, but there is only a single piece of advice that I would like to share with the founders. Of course, you have very expert advisors here, but then the co-founder should never outsource such an important matter entirely to their advisors or mentors. It's their job to get themselves educated on issues of legal, regulatory, and financial compliance and adhere to it. And for the benefit of all, I might quote a couple of examples. And going back, I want you to Google this out, understand these different cases yourself, research upon it, use your own mind, apply your own thought, and create your own journey. तो जब एक स्टार्टअप शुरू करता है, मोस्ट इम्पोर्टेंटली उसके को फाउंडर्स कौन होते हैं? फ्रेंड्स फ्रॉम कॉलेज, रिश्तेदार, आसपास के लोग जिनको आप जानते हो, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उन सारे लोगों पे आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं. सो most of the time, I wouldn't say even 9 out of 10 cases, it's probably 99 out of 100 cases, the co-founders do not execute a co-founders agreement. Co-founders agreement co-founders नहीं करते, and जो startup CAs हैं या lawyers हैं, वो भी इस point पे उतना ज़्यादा emphasize नहीं करते. इसमें बहुत सारी दिक्कतें भी हुई हैं. वो सारे लोग जो कि कभी जिगरी दोस्त होते थे, बाद में जब धीरे धीरे पैसा बनने लगता है तो उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, एंड देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट.
वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जांपल्स इज शॉप क्लूज, जहाँ पे घर के अंदर ही लड़ाई हो गई, अपने दोस्त ही पराये हो गए। तो यू कैन नेवर ट्रस्ट एनीवन। ऑल को-फाउंडर्स मस्ट एग्जीक्यूट ए को-फाउंडर्स एग्रीमेंट, जिसमें नॉन कम्पीट क्लॉज का बहुत ही स्पेसिफिक मेंशन होना चाहिए। जब स्टार्टअप थोड़ा बड़ा होगा तो उसमें एम्प्लॉयज़ आएंगे। जब एम्प्लॉयज़ आएंगे तो कुछ छोड़ के भी जाएंगे और कुछ आपके कॉम्पिटिटर कंपनी में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ कुछ अलग तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल फ्रेशवर्क और ज़ोहो के यूएस में लंबे चले कोर्ट केस में हुआ। मीशो ने अपने एम्प्लॉयज़ के साथ काफ़ी लंबा लिटिगेशन किया क्योंकि वो उसके कॉम्पिटिटर्स को जाके ज्वाइन कराए। तो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी ये रिलेशनशिप को मैनेज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। लीगली अपने प्रोडक्ट और उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिर्फ ट्रेडमार्क और पेटेंट से डिफेंड नहीं किया जा सकता। तो यू हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ द एस्पेक्ट एज वेल। पैसा बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट और चाहिए होगी। जब इन्वेस्टमेंट होगी तो फिर इन्वेस्टर्स बोर्ड पर आएंगे एंड सडनली वन फाइन मॉर्निंग यू विल रियलाइज दैट there are other stakeholders and you need to consult them. Jab, most recently we have seen a lot of, I wouldn't like to name a particular episode, but almost 3 साल के अंदर जो फाउंडर सीईओ होता है, it's seen that almost 60% of the founder CEOs they get fired by their own board, and because the startup continues to mature in its journey and जो फाउंडर सीईओ के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, जो कि स्टार्टिंग में वो उस जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभा पा रहे थे, वो धीरे 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 अब उसको अच्छे से नहीं निभा पा रहे। तो अपने बोर्ड के साथ रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करें, लीगली उसको कैसे डिफेंड करें, किस तरीके से इन्वेस्टर्स को आप शेयर्स इशू करें। मोस्ट ऑफ द टाइम सारे शेयर्स जो कि स्टार्टअप फाउंडर्स इशू करते हैं इन्वेस्टर्स को, वो लगभग एक ही टाइप के होते हैं, बट शेयर्स में भी डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स के साथ आप शेयर्स इशू कर सकते हो। उसमें ओला के भावेश अग्रवाल का सबसे अच्छा एग्जांपल है। यू कैन गूगल अबाउट दिस एंड लाइक रीड मोर अबाउट इट। एंड डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बहुत कम स्टार्टअप फाउंडर्स को मैंने देखा है एग्जीक्यूट करते हुए। एंड बहुत ही हड़बड़ी में, बहुत ही डेस्परेट होके अब वल्नरेबल सिचुएशन में जब कैश रेज करेंगे तो बहुत जल्दी, इनफैक्ट लेस देन 3 इयर्स, आपके अपने बोर्ड से ही फायर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो वहाँ पे लीगली आप अपनी पोजीशंस को आपने डिफेंड करना चाहिए। एंड financial compliance, of course, you will have CAs and CS to guide you. आजकल वर्चुअल CFOs भी काफ़ी पॉपुलर हो गए हैं, बट देन यू शुड नॉट लीव एनीथिंग टू चांस। एंड फाउंडर का काम सिर्फ प्रोडक्ट बनाना नहीं है, ठीक है, एंड यू कैन नॉट आउटसोर्स दिस एंटायरली टू अ सर्विस प्रोवाइडर। प्लीज़ गेट योर सेल्फ एजुकेटेड एंड अपनी जिम्मेदारी को खुद पूरा करें। आई लाइक टू फोकस ऑन द पॉइंट जो मुझसे कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें। तो इन्वेस्टमेंट मैंने पिछले 10 सालों में कोई ऐसा फाउंडर नहीं देखा जो कोई डिजर्विंग प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हैं एंड उनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिली। दिस इज़ अ बिग स्टेटमेंट, बट आप दूसरे लोगों को कॉपी करने की कोशिश मत करें। काफ़ी ज़्यादा फंडिंग ऑलरेडी आप देख रहे होंगे, so possibly you might be excited a lot and it's very natural. India is a big country and we have many diverse problems cutting across, and आप जितना बड़ा प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बनेगी, और आप उस प्रॉब्लम को जितने अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे उतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके पीछे आएगा। So there is enough dry powder in the ecosystem, whether you are from a small city or a big city. At this point in time, the bridge has been, I would say, created. So there is free flow of talent and capital. Try to look for problems around you. Try to solve problems जो बहुत सारे लोगों को एक साथ कंसर्न करता है। जितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी, जितना बड़ा आप सोल्यूशन लेके आओगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप इम्पैक्ट करेंगे,
फंडिंग के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे, एंड पॉसिबली funding should not be the goal. Of course, creating the product or the service for your customer, and be really passionate about your product. ना तो फंडिंग को गोल बनाना चाहिए, एंड आई वुड से ना तो अपने प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होनी चाहिए. If at all anything, I would advise falling in love with your customer, because customer is the king. And yeah, my wishes and best wishes to each one of you here. In case you have any doubts, you ever want to reach me, I'm available on LinkedIn, and you can always call me back by contacting the organizers of this event. Thank you so much for this opportunity. थैंक यू सो मच आशुतोष सर. बहुत ही अच्छा. एक को फाउंडर को ध्यान रखना चाहिए और फाउंडर को कि किस तरीके से हम प्रॉपर एग्रीमेंट और डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आगे जाएंगे तो किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी. सो नाउ आई वुड लाइक टू गिव स्टेज टू मिस्टर दिवेश गोयल to share his thoughts. Divesh sir, Thank you, over to Devanshi. you. Thank you. So first of all, I would like to thanks to the GIC for giving me an opportunity to interact with the members on this platform, and thanks to the CEO Smart City and the Srivastav sir. As I was listening the view of all the experts, as a company secretary, as we are working for so many startups and so many big companies throughout the country. So I have just found some things which are there, we can say, in the companies which has already grown up and the startups which are on the growing stage right now. As I was going through the curriculum which the last 15-year legal Pathshala has tried to teach everyone, that curriculum is very great, because as a company secretary, it is our duty to suggest how to do the compliances, help to do the compliances at the time of the new fundings, and a lot of things are there. So one thing which we have found, ki many times there are the lack in the compliances, there are the non-compliances by the startups, and the reason is that definitely it is not expected from a business owner, or expected from a promoter of the startup, that that person will know the compliances, because that is not their forte. Their forte is how to do the business, their forte ki how that product can work, how they can do the marketing. But with all those things, with all those business strategies, they require a legal support from a person ki how to do the compliances, because a single non-compliances, a single small non-compliances can cause lot of penalties on them. Recently we have just handled one case for a startup in the Karnataka. In that case, they are receiving the funding from the we can say from the market, but they have made a small mistake, small non-compliance, not a big non-compliance, and for that government have imposed, the authority have imposed penalty of crores on them. Even that was a small startup and that was a small mistake. So we have taken up that matter, we have gone into appeals, and we have settled on a small amount of the penalties. So from that case, from that particular, we can say corporate case, I understood one thing, that it is very much important for the startup to compliance with the law, because these days, as all said, with respect to everyone, ease of doing business is there, but along with ease of doing business, the government want that the corporate should comply with the law, because compliance is necessary for the governance, compliance is necessary to the grow the country. So if any startup or any company which is not doing any compliance, which fails in any compliances, so lot of we can say repercussions are there. So सभी स्टार्टअप ओनर से, सभी प्रमोटर से, दिस इज माय रिक्वेस्ट, और दिस इज माय, यू कैन से माय एडवाइस, कि you should take the advice from the legal professionals, advice from the company secretaries, we can say, whenever you are doing any compliances, whenever you are doing going for any fundings, which I have observed, सबसे ज्यादा जो नॉन कंप्लायंस होते हैं ना, वो एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टिंग ऑफ फंडिंग होते हैं.
जैसा अभी आशुतोष जी ने बोला, जब फंडिंग आ रही होती है तो द ओनली थिंग इज आवर माइंड की फंडिंग आ जाए, कैसे भी आ जाए, वी आर नॉट सीइंग की क्या इसके लिए हमने प्रोसेस फॉलो किया है, क्या गाइडलाइंस फॉलो की है, क्या लॉ फॉलो किया है. सो डेफिनेटली लीगल पाठशाला हैज डन अ ग्रेट जॉब बाय टेलिंग द compliances to the director, because it is advisable to all the directors कि at least you all should be aware about the basic compliances of the company. Definitely it is, I'm not saying कि you should learn all the compliances, because these basic compliances, small compliances having a big impact on your business. Because you know one thing, whenever any investor came to invest in your company, the first thing that person will conduct is the due diligence of your company, due diligence of the compliance of your company. And if at the time of due diligence that person found any even a small mistake or the small non-compliance, so that person can, we can say, take his step back from the funding, and that will be, we can say, a big thing for your company. So as a company secretary, as a professional, it is my advice to all the startups, to all the, we can say, promoters, to try to comply with the law in a proper manner. I must tell you, compliance cost is very less and the non-compliance cost is very high. So it's better to spend a little bit on the compliance cost, because that can save a big amount of your non-compliance cost, and even that can give you a confidence also. If you will be compliant, you will be confident that yes, investor want to due diligence, you will say yes, go for the due diligence, because our company is a proper compliant company. So definitely JIC is doing a great job by teaching all of you all the compliances. And I would like to say one thing, as thanks to the JIC that they have added me in their circle, they have added me with them to advise to the startup. So now I'm always available for the JIC, and whenever there any help required from my side, I'm always here to advise, always here to guide how to do the compliances and help the startup. Because I'm working, I'm having my office in Delhi, but I'm working for throughout the country. We are working even for the small startups and the big companies like State Bank of India and BSEs also. So the one point which I shared with all of you, the compliance importance, and this is one of the topic in our curriculum also, the legal Pathshala. Compliance are very important for each type of business. Compliance help to motivate you, help to, we can say, increase your confidence, help the confidence of the stakeholder. As a corporate, the most important thing is the confidence of the stakeholder. If the stakeholder having the confidence in your company, then definitely you will grow. So it is my advice to all of you, go go with the compliances so that you can grow in a better manner with the confidence. Thank you so much, JIC, for this opportunity. थैंक यू, थैंक यू, बिल्कुल, थैंक यू। हाँ जी, देवांश। रियली थैंक यू सो मच देवेश जी। और डेफिनेटली ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ था। देखिए देवेश जी ने जिस तरह से मोटिवेट किया कंप्लायंसेस को लेकर के, तो हमारा पूरा लीगल पाठशाला, जैसा कि देवेश जी ने कहा, वाकई में पूरा हमने डेडिकेट ही किया था। किस तरह से राइट फ्रॉम द बिगनिंग कंपनी फॉर्मेशन के बाद जो कंप्लायंसेस शुरू होते हैं, टाइमली उन्हें करते चलना है, अपने वैल्यूएशन को बढ़ाने के लिए, अपने वैल्यूएशन को अच्छा रखने के लिए, अपनी अकाउंट बुक्स कैसे क्लीन रखना है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो स्टार्टअप्स ने इस पूरी जर्नी में सीखा। और डेफिनेटली अब एक वो टाइम आ गया है। इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी फॉर अस सिंस लास्ट 15 डेज। वो जब हमने 4 मार्च को पहली बार ये सेशन स्टार्ट किया, इनॉग्रल सेशन से, जहां पर अंडरस्टैंडिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन लाइसेंसेस जैसे टॉपिक्स से हमने स्टार्ट किया, वो लास्टली अब जीएसटी और सिंप्लीफाइंग टैक्सेशन जैसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमारे डिफरेंट डिफरेंट पूरे हमारे ऑल ओवर द कंट्री से एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कवर अप किया। और डेफिनेटली आज जो है हम उस स्टेज पर आ गए हैं कि जहां हम ये एक हमारे पाठशाला सीरीज का हिस्सा था, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। और हम लगातार कोशिश करते रहेंगे कि हम इस तरह के कुछ और नए कंसेप्ट्स के साथ, कुछ और प्रॉब्लम्स को रिकॉग्नाइज करके स्टार्टअप्स के, न्यू एंटरप्रेन्योर्स के कुछ और एक नया सीरीज शुरू कर सके। तो मैं अग्रांशु द्विवेदी, इंक्यूबेशन मैनेजर, Jabalpur Smart City Incubation Center, on behalf of my entire Jabalpur Incubation Center team as well as the team of Jabalpur Smart City,
our very own respected CEO, Jabalpur Smart City, Nidhi Singh Rajput ma'am, who has been continuously supporting us. और आज के इस कार्यक्रम में जिस तरह से आपने देखा कि हमारे साथ जो है हमारे कमिश्नर यूएडीडी श्री निकुंज श्रीवास्तव सर भी जुड़े और उन्होंने इतनी महत्वपूर्ण चीजों को, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज जाता है हमारे स्टार्टअप्स को जब सभी और इतने बड़े लेवल से हमारे अधिकारीगण, हमारा पूरा जो कम्युनिटी है वो आज सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए वी हैव बीन एबल टू स्टैंड एट थर्ड पोजीशन ऑल ओवर द वर्ल्ड in terms of startup ecosystem, and definitely जो आगे का जर्नी है उससे और बेहतर होने वाला है। तो आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी जो हमारे जैसे हमारे जो चीफ गेस्ट हैं श्री निकुंज श्रीवास्तव सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक आवर रिस्पेक्टेड सीईओ जबलपुर स्मार्ट सिटी निधि सिंह राजपूत मैम, सीए अंशुल अग्रवाल जी, शिवेश कुमार जी फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो, दर्शना ठाकर मैम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, सीएस देवेश गोयल जी जिन्होंने इतनी महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए हर सेशन हमारा इम्पोर्टेंट था, आज वैलिडिक्टरी सेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमारे स्टार्टअप्स के लिए, हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो कन्वे हुई हैं। श्री श्रीनिवास कोडप्पा जी का जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड पर इतनी महत्वपूर्ण चीजें जो है हमारे स्टार्टअप्स को बताई। Also, I would like to thank all the 15 esteemed guests and speakers जो हमारे साथ 4 तारीख से लेके 19 तारीख तक जो हमारे डिफरेंट सेशंस थे उनमें हमारे साथ जुड़े हुए थे। उस सीएस साक्षी गुहा जी, मिस नेहल ठाकर जी, मिस सृष्टि चतुर्वेदी, सीएस निशांत मेहता, स्वाति चतुर्वेदी जी, अंकित कुडवाल जी, साक्षी गुहा जी, रिधिमा दीक्षित, अनूप गुलानी जी, गौरव कुंडवाल जी, सीए गुंजन शाह, गौरव कुडवाल और जतिन नामदेव, ये वो सभी नाम हैं, वो सभी मेंटर्स हैं जिन्होंने लास्ट 15 दिन की इस जर्नी को बहुत इजी बनाया, हमारे स्टार्टअप्स को इतने महत्वपूर्ण टॉपिक्स को उन तक बड़े इजीली पहुंचाने में हमारी मदद की। एंड डेफिनेटली लास्ट बट नॉट द लीस्ट आई वुड लाइक टू थैंक ऑल आवर व्यूअर्स जो लगातार 15 दिनों से हमारे साथ जुड़े रहे और एक बहुत बड़े वी आर ऑन अ मिशन जहां हमें अपने स्टार्टअप इकोसिस्टम को वाकई में मजबूत करना है। वो छोटी छोटी सी कोई भी चीज चाहे वो लीगल फॉर्मेलिटीज के फॉर्म में हो मिस ना हो हमसे और हम एक प्रोफेशनल की तरह आगे बढ़ सके, यही हमारा उद्देश्य था। और ऐसा लगता है जो लगातार लगभग 10,000 लोग हमारे साथ इस लीगल पाठशाला में जुड़े, हम कहीं ना कहीं उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। तो रियली वी वुड लव टू थैंक यू ऑल और इसी तरह से आप जुड़े रहिए लगातार हमारे साथ। आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक होस्ट देवांशी जिन्होंने लगातार इतने अच्छे से कोऑर्डिनेट किया हमारे सारे गेस्ट के साथ, हमारे सारे स्पीकर्स के साथ, जिनके थ्रू जो है इतना अच्छा नॉलेज जो है हमारे स्टार्टअप्स तक आज पहुंच सका। तो वी वुड रियली लव टू थैंक एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस और इसी तरह से आप जुड़े रहिए जबलपुर स्मार्ट सिटी जबलपुर इंक्यूबेशन सेंटर के साथ। आपके स्टार्टअप जर्नी में आपको कहीं भी कोई डिफिकल्टी आती है, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट और हमारा पूरा शासन प्रशासन हर तरह से मदद कर रहा है। आप आगे बढ़िए और बिल्कुल मध्य प्रदेश जो इस समय देख रहा है कि हम बहुत जल्दी हमारे यहाँ से यूनिकॉर्न्स प्रोड्यूस करेंगे और डेफिनेटली सपने को बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अग्रांशु सर। सभी जो आज हमारे साथ जुड़े उन्हें भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। प्लस जो 15 डेज हमारे साथ जितने लोग जुड़े उन्हें थैंक यू कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं अपने सारे स्पीकर्स एक्सपर्ट्स जो 15 डेज हमारे साथ जुड़े उन्हें बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगी। एंड सो टिल वी मीट नेक्स्ट, यू ऑल टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके उन सभी के जो सर्टिफिकेट्स हैं इस लीगल पाठशाला के वो हमारी वेबसाइट www.jicjabalpur.org से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से उन्हें वो सर्टिफिकेट्स भी मिल जाएंगे। तो डेफिनेटली आप वहां पर जाइए और जरूर। और अग्रांशु सर इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, जो हम लोगों ने 15 डेज कंटिन्यूअसली क्विज रखा था हमारे पार्टिसिपेंट्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, तो उनके भी विनर्स हम कल अपने सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से सभी को अनाउंस करेंगे। तो प्लीज हमारे जो सोशल हैंडल्स हैं उन्हें फॉलो करें और अपडेट्स लेते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। थैंक यू।